A very good morning to all of you. So in last class, we were studying free consent. हमने free consent के अंदर 5 elements समझाए थे जो होते हैं अगर वो present होंगे then in that case consent is not considered to be free. Last class में हमने cover किया था coercion, undue influence, fraud, misrepresentation. मैंने mistake छुड़वा दिया था but mistake is just a 1 minute topic. Then I'll move on to the next chapter. So mistake is basically जब दोनों parties या एक party they misunderstand each other. They are in a misunderstanding regarding a fact of the regarding either law of the country. ठीक है, तो mistake है जब दोनों parties they misunderstand some things about the contract, about the agreement. So mistake can be mistake of fact, mistake can be mistake of law. ठीक है, mistake of fact का मतलब क्या है? जब जो चीजें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैटर है, that could be regarding the price, that could be regarding quantity, that could be regarding the delivery, that could be regarding the mode of the delivery, right? So these are mistake of fact. और law हो गया कि आपका जो भी आप जिस कंट्री में है या कहीं बाहर है तो कौन सा उसके ऊपर लॉ गवर्न कर रहा है वो. तो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट मिस्टेक ऑफ फैक्ट. ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर मिस्टेक कुड बी वन साइड, मिस्टेक कुड बी टू साइड. ठीक है, जब दोनों पार्टीज ही एट मिस्टेक है उसे हम बोल देते हैं बाइलेटरल मिस्टेक. सिंगल पार्टी अगर मिस्टेकन है रिगार्डिंग समथिंग दैट इज कॉल्ड यूनिलेटरल मिस्टेक. दोनों ही केसेस में इट इज अ वॉइड अग्रीमेंट. ये वॉइडेबल नहीं है यहाँ पे, ये हम ध्यान रखेंगे. मिस्टेक के केस में agreement is void and not voidable. So in I'll repeat. Suppose A said to B, ठीक है, A ने B को बोला that I want to sell my car to you for ₹1 lakh. ठीक है, और A के पास suppose 2 cars है, एक है Honda City और एक है Suzuki Ciaz. ठीक है, ए बोल रहा है आई वांट टू सेल माय होंडा सिटी टू यू फॉर ₹1 lakh एंड दैट द कन्वर्सेशन वाज हैपनिंग ओवर द phone call. A said I want to sell the city to you for ₹1 lakh and B heard that he was talking about Ciaz for ₹1 lakh and he said okay. ठीक है, लाइन में डिस्टर्बेंस थी because of which B heard Ciaz and A said city. So here the parties are at mistake, so this renders the agreement as void. It is not voidable. ये agreement ही खराब है because there was a mistake of fact. He said I am selling it at 1 lakh. We heard 1.5 lakh. Again there is a mistake of price. ठीक है, so for more details, since this is a very easy topic, you can refer your book. Just see what is there in the book, and if there are doubts, you can always telegram it to me and ask your doubts regarding mistake. That's a very easy topic. So mistake of law as in suppose हम ICA पढ़ रहे हैं, Indian Contract Act पढ़ रहे हैं. So if we live in India, right, तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि हम हमारे country का law क्या है, what law we are subject to. So if we make a mistake of our own law, the law of our country, then in that case it is not excusable. But if we are dealing with some other person who lives in a foreign country, right, that person is subject to foreign law. So if we make a mistake regarding foreign law, then that is excusable. Okay, that is excusable. That will make the agreement as void. But if we make the mistake of our own country, then in that case that is not excusable. That will not render the agreement void because one is supposed to know the law of his or her own country. So that was all in mistake. This free consent is over. Next, I'll start with the chapter void agreements. जब हम पढ़ रहे थे सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो सेक्शन 10 के अंदर मैंने एक पॉइंट कराया था, अग्रीमेंट्स व्हिच लॉ एक्सप्रेसली डिक्लेयर्स void. ठीक है, अगर आप लोग वो स्लाइड्स देखें, अगर आपके पास उनके स्क्रीनशॉट्स हैं, आप वो देखें. सेक्शन 10 के अंदर एक पॉइंट होगा, अग्रीमेंट व्हिच लॉ एक्सप्रेसली डिक्लेयर्स टू बी void. तो ये वो चैप्टर है, void agreements. These are those agreements which
law has said, which law has marked them as expressly void. Void agreements क्या होते हैं? Void agreements वो होते हैं जो शुरू से ही बेकार होते हैं, जिनकी वैल्यू लॉ की नजर में बिगिनिंग से ही कुछ भी नहीं है, उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं void ab initio, राइट? तो void agreements अभी तक हमने कौन कौन से पढ़े हैं? अगर हम देखें, जिन agreements में कोई consideration नहीं है, they are void, right? Minor agreement with minor, agreement with people of unsound mind, they are void. ठीक है, अभी हमने पढ़ा अगर मिस्टेक हो रही है किसी अग्रीमेंट में, दे आर void. ठीक है, बायलेटरल मिस्टेक, यूनिलेटरल मिस्टेक या फिर फॉरेन लॉ की मिस्टेक हो रही है, देन दे आर आल्सो void agreements, यानी वो शुरू से ही बेकार है. We term them as void ab initio. But in this chapter we are going to study what are the agreements which the law has declared to be void. कौन से वो agreements हैं जिनको law ने declare कर रखा है, yes they are void. Since beginning there are 7 such agreements जिनको law ने कह रखा है हाँ ये भी बेकार है. तो कौन कौन से 7 agreements हैं? वो ये 7 agreements हैं. Agreements in restraint of marriage, agreements in restraint of trade, agreements in restraint of legal proceedings, agreements the meaning of which is uncertain, agreements by way of wager, agreements contingent on impossible events, and agreements to do impossible acts. So we are going to discuss all these 7 agreements in today's class one by one. Right. So the first one is agreements in restraint of marriage. So agreement in restraint of marriage क्या हो गया? Basically कि दो पार्टी के बीच में agreement हो रहा है. A बोल रहा है B को that I will give you rupees 10 lakhs if you do not marry your entire life. ठीक है, A बोल रहा है B को मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, आपको जिंदगी भर शादी नहीं करनी. ठीक है, तो ये agreement is void. A बोल रहा है B को I will give you rupees 10 lakhs if you do not marry for a period of 5 years. ठीक है, I'm again repeating, A बोल रहा है B को I will give you rupees 10 lakhs if you do not marry for the period of 5 years. ठीक है, 5 years निकल जाते हैं, B does not marry. A उसको पैसे देने से मना कर देता है. So this agreement it goes to court of law. B बोलता है, he said कि मैं 5 साल तक मैरिज नहीं करूंगा, तो he will give me 10 lakh. Now I have not married for a period of 5 years. I want the money. Right. So in this case, it will be held that this agreement was void since the beginning. Hence, court cannot enforce it. Court will not ask A to give 10 lakhs to B because ये शुरू से ही बेकार है. Now what I want to say here is कि ये agreement जो है, that could be total, that could be partial. अगर मैंने कहा पूरी जिंदगी शादी नहीं करूंगा, तो ये हो गया टोटल, एब्सोल्यूट. A will not marry throughout. ये partial हो गया. A will not marry for a period of 1 year. A will not marry for a period of 6 years. Or A will not marry for a period of 5 years, 10 years. So this is partial restraint. ठीक है, जो restraint है, restraint मतलब मना करना, restraint avoid करना कोई चीज. So restraint could be total, restraint could be partial. Right, it is not only in regard to the number of years. That could be regard to a community. So A says to B that I will give you rupees 10 lakhs if you do not marry a person from this particular community. Right, but this will also fall under restraint. Restraint is not just respect to the number of years. Right. A says to B that I will give you rupees 10 lakh if you do not marry C. Now this is also restraint. This is also invalid. So any sort of restraint, मना करना शादी के लिए, number of years के लिए या किसी particular person के लिए, that is also a restraint and it is invalid. Right. But if I talk about that promise to marry a particular person is valid contract. A says to B, I will give you rupees 10 lakh if you marry C. Now this is valid. So promise to marry a particular person is absolutely valid. ठीक है, but आप restrain कर रहे हो कि आप शादी नहीं करोगे. ठीक है, this is invalid. एक ऐसा restraint भी आ सकता है कि आप A के सिवाय किसी और से शादी नहीं करोगे. ठीक है, वहां पर वो valid है यार, you will marry A, I will give you rupees 10 lakhs.
ठीक है, यहाँ पे वो वैलिड बन जाता है बिकॉज देयर इज ऑल्सो अ प्रॉमिस टू मैरी अ पर्टिकुलर पर्सन. बट अगर रिस्ट्रेंट है देन दैट इज एब्सोल्युटली void. Right? I hope this is clear that agreements restraining the marriage, uh, restraining the marriage, either the restraint could be total or the restraint could be partial. It renders the agreement void. So this was first point. The first restraint, agreements in restraint of marriage. Next is agreements in restraint of trade. So agreements in restraint of trade. See, every individual, every person is at a liberty, is at a freedom to pursue profession, business of his or her own choice. ठीक है, सबको अपने लिए कमाने का पूरा हक है और अपने लिए चूज करना कि वो क्या करना चाहता है, क्या बिजनेस करना चाहता है, क्या प्रोफेशन करना चाहता है. दैट इज एब्सोल्युटली वैलिड. इसमें अगर कोई पर्सन आके दूसरे पर रिस्ट्रेंट लगा रहा है, सपोज ए कम्स एंड सेज टू बी, right, that I will give you, just let me check. I just hope my screen is visible to all of you. Just I didn't ask, so I just want to check if the screen is visible to all of you. Please just type yes. I hope the screen and my voice is perfectly audible because I can see some network issues. Can you quickly type yes if you can hear me and see the screen? I'm not able to get your replies, class. Can you please quickly type yes? Okay, so okay, thank you, Karandeep. Thank you. So I was talking about agreements in restraint of trade. So every party, every person is at a liberty to follow the profession, to do the business of his or her own choice. अगर suppose A B को बोल रहा है that I will give you rupees 10 lakh if you do not enter into a shoe business. अगर आप shoe का business नहीं करोगे for a period of 5 years, right? If you do not enter into a business of shoe for the period of 5 years, I will give you rupees 10 lakhs. So B 5 साल तक शू का बिजनेस नहीं करता एंड वहां पे ए उसको पैसे देने से मना कर देता है. तो B कैन टेक ए टू कोर्ट ऑफ लॉ, राइट? B विल टेक ए, बट कोर्ट वहां पे क्या डिसाइड करेगी? Then this is agreement in restraint of trade. Therefore, it is not valid. It is void. खराब agreement है. So A is not supposed to give B rupees 10 lakhs, right? So agreements which are restraining the other person to do business or profession or trades is absolutely void. And again, in this case, such agreements, even if total or even if partial, they are void. ऐसा नहीं है अगर वो बोल रहा है शू बिजनेस मत करो, या एक होता है ए बोल रहा है अगर आप किसी बिजनेस में एंटर मत करो, आई विल गिव यू सैलरी, डोंट एंटर इनटू एनी बिजनेस. नो दिस इज अगेन void. ठीक है, ये हो गया टोटल कि आप किसी बिजनेस में एंटर ही मत करो. एक हो गया आप शू बिजनेस में एंटर मत करो, या 2 साल के लिए बिजनेस में एंटर मत करो, 5 साल के लिए बिजनेस में एंटर मत करो. ये हो गए पार्शियल रिस्ट्रेंट. ठीक है, आप वो बोल रहा है आप किसी भी बिजनेस में एंटर मत करो या अपने लाइफ टाइम के लिए एंटर मत करो, ये बन जाता है टोटल. फॉर इंस्टेंस, राइट, वो बोल रहा है आप 5 साल के लिए या 2 साल के लिए 6 महीने के लिए यू डोंट डू एनी बिजनेस, I will give you rupees 1 lakh. These restraints are partial. So restraint could be either partial, restraint could be total, but in India they all are void. If I talk about English law, the law in UK, in that case English law के अंदर agreements, only the total agreements are void, but partial agreements are valid. I'm talking about English law में only the total agreements are void, but partial restraints are valid. So in India, in ICA, in Indian Contract Act, all the restraints in respect of trade, whether total,
whether partial, whether general or particular, they all are void. Now there are some exceptions to it. Right, so exceptions as in where the agreements in restraint of trade are valid. So exceptions to this, agreements in restraint of trade are void. So we are going to study the cases where agreements in restraint of trade they are considered valid. तो वो कौन से cases हैं? सबसे पहला है sale of goodwill. Right. So let me explain it through an example. Agreements in restraint of goodwill. Suppose A का शू बिजनेस है, ठीक है, उसका दिल्ली के अंदर शू बिजनेस है एंड दैट इज अ वेरी प्रोमिनेंट बिजनेस, एवरीबडी नोज अबाउट दिस बिजनेस, मतलब ही हैज अ ह्यूज क्लाइंटेल ऑफ हिज बिजनेस, ठीक है. A wants to sell off his business, ठीक है, since it is a very renowned business, so A is selling the business to B. So and A is in the sale of the assets, A is also charging a goodwill of rupees 50 lakhs from B. So sale of assets के अंदर goodwill भी है 50 लाख की, ठीक है. अब suppose B is paying for this goodwill of 50 lakh. B दे रहा है goodwill के. B is buying the shoe business of A and he is also paying the goodwill of rupees 50 lakhs to A. अब अगर वो goodwill दे रहा है, ठीक है, तो he would want to make benefit out of that goodwill purchased. For instance, A ने अपना सारा का सारा बिजनेस बेच दिया B को और वो 2 महीने के बाद in period of 2 months वो वापस अपने शू बिजनेस में आ गया. He had a name and fame in the market, so there is a huge probability जो A के कस्टमर्स थे, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे, जो अब B के पास चले गए थे बिकॉज उसने अपना बिजनेस B को बेच दिया था, वो वापस A के पास आ जाए, तो वहां पर B का क्या होगा? B will suffer a loss बिकॉज उसने 50 लाख तो गुडविल के भी दिए, लेकिन गुडविल ए ने अपना बिजनेस दोबारा खोल लिया और जो वो गुडविल का बेनिफिट बी को मिलता वो सारा का सारा वापस जा रहा है ए को, क्योंकि ए इज बैक इन बिजनेस, ए हैज रिटर्न टू द सेम बिजनेस. तो वहां पर जब भी सेल ऑफ गुडविल होती है वहां पर कुछ क्लॉजेस हो जाते हैं दैट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन विल नॉट कम बैक in that particular business. In order other person can create an advantage, can make a profit out of that goodwill purchased. So iske andar there is a case of gold soul versus gold man, right? So I'll write the name. Then the name of the case is gold soul is gold man. The case that I'll tell you about, iske andar what is happening, a person is a seller of, so A for instance is a seller of imitation jewelry in London, ठीक है, लंदन के अंदर इमिटेशन ज्वेलरी बेच रहा है ए एंड ए इज सेलिंग ऑफ हिज एंटायर बिजनेस टू बी. ए इज सेलिंग ऑफ द एंटायर बिजनेस टू बी. तो इसके अंदर बी ए के ऊपर क्या कंडीशंस लगा रहा है? बी ए के ऊपर पहली कंडीशन ये लगा रहा है, यू विल नॉट डू बिजनेस ऑफ इमिटेशन ज्वेलरी लंदन. कंडीशन ये लगाई है बी ने. सेकेंड कंडीशन,
ये लगा रहा है बी दैट यू विल नॉट डू बिजनेस ऑफ रियल ज्वेलरी इन लंडन। और जो थर्ड कंडीशन लगा रहा है, थर्ड कंडीशन ये लगा रहा है यू विल नॉट डू बिजनेस ऑफ इमिटेशन ज्वेलरी एंड रियल ज्वेलरी इन फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज। तो ये तीन कंडीशंस लगाई हैं। तीन बी ने क्या कंडीशन लगाई, इस गोल्ड सॉल वर्सेस गोल्डमैन वाले केस में इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस नहीं करेगा ए लंदन के अंदर, रियल ज्वेलरी का बिजनेस नहीं करेगा लंदन में, और इमिटेशन ज्वेलरी और रियल ज्वेलरी का बिजनेस नहीं करेगा लंदन के अंदर। सो इट वाज हेल्ड इन द कोर्ट कि ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, ओनली दिस इज वैलिड, सिर्फ ये वाला पॉइंट इज वैलिड, all the other points they are not valid, they are they are not justifiable, they cannot be justified. So this first was valid. So this was exception this was exception to sale of agreement and restraint of trade. So goodwill jab sell kar rahe hain, in that case that is valid, right? The second is exceptions under Indian Partnership Act. So if we can recall our 12th standard, उसमें हमने पार्टनरशिप डीड में पढ़ा होगा कि अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर 4-5 पार्टनर्स हैं तो दे कैन हैव सच एन अग्रीमेंट बिटवीन देम कि एक पार्टनर दूसरा पार्टनरशिप फर्म का एक पार्टनर दूसरा बिजनेस नहीं कर सकता, ठीक है, दिस इज वैलिड। पार्टनरशिप फर्म के अंदर इफ देयर आर पार्टनर्स, if there are agreement within the partners, a continuing partner cannot do a business of any kind apart from the partnership firm. In that case, it is valid. Also, for the outgoing partner, there could be an agreement between the partners. जो outgoing partners है, वो similar business में for a period, for some time enter नहीं करेगा. That is also valid. Right, outgoing partner will not enter into similar business for a period of certain time. That is also valid. Upon dissolution of partnership firm, partners के बीच में agreement हो सकता है कि वो particular business नहीं करेंगे. So they are valid. This is for the second exception. Third exception हो जाती है service agreements की. Service agreement, if I ask you, if there's a doctor in a government hospital, ठीक है, क्या वो डॉक्टर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर क्या अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है? नहीं कर सकता, राइट? सो दैट दीज आर सर्विस अग्रीमेंट्स. इफ आई टॉक अबाउट, सपोज कोई सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो पीडब्ल्यूसी में, केपीएमजी में या किसी और फर्म में काम कर रहा है, सो किसी और फर्म में वो काम करते हुए क्या वो अपनी प्रैक्टिस भी साथ में कंटिन्यू कर सकता है? राइट, सो आई होप यू ऑल वुड से कि वो नहीं कर सकता, ठीक है। अगर कोई ऑलरेडी बहुत सारे फर्म्स के अंदर भी क्लॉसेस होते हैं कि अगर कोई जॉब कर रहा है उनके साथ में तो वो अपना साइमल्टेनियसली कोई और दूसरा बिजनेस नहीं कर सकता while the person is in job. So there could be certain clauses in the service agreements. So this was all in the agreements in restraint of trade. Next we do agreements in restraint of legal proceedings. तो अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई पार्टी दूसरी पार्टी को बोल रही है, सपोज ए not, just give me a moment. Yeah, suppose A is employer, I'll write here employer. So A is employer and B is employee. A is employer and B is employee. So
ए और बी ए के लिए काम कर रहा है, ठीक है, वहां पर इनके बीच में अग्रीमेंट है कि इफ ए wrongfully terminates the employment of B, or if A without giving a due notice terminates the employment of B, in that case B will not go to court of law, ठीक है, and sue A, or if B without giving a prior notice leaves the firm of A, B will not take A to court of law, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस कुड बी फ्रॉम वन पार्टी ऑल्सो, मैंने यहाँ पे दोनों पार्टीज बोला, दिस कुड बी फ्रॉम वन पार्टी ऑल्सो, वन साइडेड भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देयर अग्रीमेंट इज रिस्ट्रिक्टिंग द अदर पर्सन फ्रॉम एनफोर्सिंग हिज और हर लीगल राइट। सपोज ए रॉन्गफुली बी को बाहर निकाल देता है फर्म से, ठीक है, विदाउट गिविंग अ ड्यू नोटिस बी को वो बाहर निकाल देता है फर्म से। सो इन दैट केस उनका अग्रीमेंट क्या है कि बी विल नॉट गो टू कोर्ट ऑफ लॉ फॉर दिस रॉन्ग एटीट्यूड, रॉन्ग स्टेप टेकन बाय ए। तो यहाँ पर बी का जो लीगल राइट है उसको फोरफीट किया जा रहा है, सो विच इज एब्सोल्युटली वॉइड। तो अगर कोई भी अग्रीमेंट ऐसा हो रहा है which is restricting the other person from enforcing his or her legal right, that is absolutely void. Right? Next is agreements curtailing the period of limitation. So consideration के अंदर मैंने एक बारी period of limitation बताया था, ठीक है, time bar dead के अंदर I told you period of limitation. So what is the limitation period? Limitation period is of 3 years. लिमिटेशन पीरियड में होता क्या है कि अगर किसी को किसी के अगेंस्ट ग्रीवेंस है तो उसको वो विद इन पीरियड ऑफ 3 years ही कैन टेक दैट पर्सन टू कोर्ट ऑफ लॉ। फॉर इंस्टेंस अगर इस केस में ही ए बी को रॉन्गफुली नौकरी से बाहर निकाल देता है, उसकी नौकरी टर्मिनेट कर देता है, तो बी कैन टेक ए टू कोर्ट ऑफ लॉ विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years, ठीक है, within a period of 3 years we can take A to court of law. But if this is limitation period, अगर 3 साल के बियॉन्ड हो जाते हैं, सपोज 4 साल हो गए, तो उस केस के अंदर बी के पास राइट नहीं है कि वो ए को ले जाए। 3 साल के बाद जो बी द राइट लैप्सेस बेसिकली, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन गिव्स अगर किसी के अगेंस्ट कोई ग्रीवियंस है so that can go to court within the period of 3 years. 3 साल के बाद you cannot take the person to court of law. So this is period of limitation. So अगर A और B के बीच में ये agreement है कि you have, अगर B को grievance है, अगर कुछ भी grievance है, वो employer को within a period of 1 year only can take employer within a period of 1 year only to court of law, right? 3 साल का पीरियड कटेल करके उन्होंने क्लॉज में डाल दिया, अगर मैं रॉन्गफुली आपको टर्मिनेट कर रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट से तो आप मुझे 1 साल के अंदर अंदर ही कोर्ट में लेके जा सकते हो, 1 साल के बाद यू कैन नॉट टेक मी टू कोर्ट ऑफ लॉ। नाउ दिस इज आल्सो वॉइड, इनवैलिड है, ये बिल्कुल वॉइड है। तो कटेल पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज ऑफ 3 years, 3 years से कम अगर आप उस पीरियड को कर रहे हो then that is a void agreement. Next is agreement for the forfeiture of rights or discharge of liability. So agreement for the forfeiture of rights. So what does that mean, forfeiture of rights? For instance, A is selling his car to B for rupees 1 lakh और उसने लिख दिया A ने कि that you have to collect your car from me after making the payment within period of 6 weeks. ये बोल रहा है I will give you car for rupees 1 lakh. So B is going to give to A rupees 1 lakh and A says कि within a period of 6 weeks after making the payment you can collect your car from me and after 6 weeks period you have no right to collect car from me. तो यहाँ पर क्या कर रहा है वो B का राइट, अगर B ने 1 लाख रुपीस दे दिए A को तो वहां पर उसका राइट है, his right is to collect the car from A. राइट, तो ये अग्रीमेंट क्या कर रहा है, ये जो बी का राइट है या अपनी जो लाइबिलिटी है, ए अपनी लाइबिलिटी कार डिलीवर करने की या बी का राइट कार पोजेस करने की फोरफीट कर रहा है कि 6 हफ्ते बाद वो नहीं ले सकता, तो दिस इज इनवैलिड, राइट। सो आई एम रिपीटिंग, ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं होना चाहिए कि दूसरे पर्सन का लीगल राइट बिल्कुल बंद कर दे
केस नहीं कर सकता दूसरा पर्सन, ये मना कर दे। सेकेंड इज अग्रीमेंट्स कर्टेलिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ऐसा अग्रीमेंट कर दे कि जो 3 साल है उसको कम कर रहा है, 3 साल को वो कम कर रहा है, 1 ईयर पे लेके आ रहा है, या 2 इयर्स कर रहा है, 1.5 ईयर कर रहा है, दिस इज ऑल्सो इनवैलिड। या दूसरी पार्टी का राइट फोरफिट कर रहा है या अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर रहा है बिना ही काम किए, तो ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं हो सकता, राइट। दीज वर 3 अग्रीमेंट्स। नेक्स्ट इज अनसर्टेन अग्रीमेंट। अनसर्टेन अग्रीमेंट क्या हो गया? अनसर्टेन अग्रीमेंट इज wherein the meaning of the agreement, right, the meaning is not certain, क्या कहना चाह रहा है agreement में, क्या terms हैं, that is not clearly understood, so it says agreements the meaning of which is not which is not certain or capable of being made certain are void. For instance, A बोल रहा है B को, ठीक है, that I will give you my car, I will sell my car to you for any price between 1 lakh and 1.5 lakh, ठीक है, ये बोल रहा है B को, I will sell my car to you for any price between 1 lakh and 1.5 lakh. B says okay. So can the meaning, can the price be made certain? अगर if this matter goes to court of law, can this be made certain? कौन से प्राइस पर कार लेने के लिए अग्रीमेंट हुआ था? No, it cannot. So this is void agreement, right? So ये जो अनसर्टेन अग्रीमेंट्स हैं, ये भी हमने जब सेक्शन 10 पढ़ा था आईसीए का, उसके अंदर किया था, अग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, एक पॉइंट पढ़ा था, तो वही पॉइंट यहाँ पर है, ऐसे अग्रीमेंट्स भी दे आर void, क्या, ठीक है। और सपोज ए इज ऑयल डीलर, ठीक है, A deals in oil, B goes to A and says I will buy oil from you, yeah, A says to B I will sell oil to you for rupees 400 per liter, for instance. B says okay, I'll buy oil at the price of 400 per liter. Now here this agreement between A and B is uncertain because we don't know which oil A is referring to. A is oil dealer and he could be dealing in various kinds of oils, right? So but if A is a dealer of coconut oil only and then this agreement happens, then this would be void, then it would be valid because वहां पर circumstances से clear है कौन से oil की बात हो रही है, because A deals only in coconut oil. But if A deals in various oils और वहां पर agreement हो रहा है to supply oil 4 liters of oil at price of 400 per liter, उस केस में it will become void. So this is uncertain agreement, right? Next, we do wagering agreements, right? So wagering agreements क्या होते हैं? Wagering agreements होते हैं, आपने अगर इसका नाम पहले नहीं सुना, आप लोगों ने सुना होगा betting, right? If you have heard of betting, so betting is a wagering agreement. हम हिंदी में उसको बोल देते हैं सट्टा लगाना, सट्टेबाजी. So that is a wagering agreement है. तो इसमें क्या होता है? इसके अंदर wagering is promise to give money or money's worth upon the determination or ascertainment of an uncertain event. Just a minute. Yeah. So what is happening in just a minute, class? Yes, sorry. So you're talking about wagering agreements. Wagering agreements basically वो होते हैं जहां पर दो parties के बीच में ऐसा हो रहा है कि that if I win, I will take one. If I win, you give me ₹1,000. If you win, I will give you ₹1,000. Right. So these are wagering agreements. यहाँ पर क्या हो रहा है? Promise है to give money or money's worth upon determination of an uncertain event. Suppose A बोल रहा है B को
देयर इज अ मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, इंडिया और इंग्लैंड का क्रिकेट मैच है, ए और बी के बीच में हो रहा है। ए सेज इंडिया विन विन, बी सेज इंग्लैंड विल विन। ठीक है, ए बोलता है इफ इंडिया विंस यू विल गिव मी 1000 रुपीज, और इफ इंग्लैंड विंस आई विल गिव यू 1000 रुपीज। ये इनके बीच में अग्रीमेंट है। आई होप दिस इज क्लियर। इन्होंने मैच, क्रिकेट मैच में एक बेट करी है। ए बोल रहा है इंडिया जीतेगा, बी बोल रहा है इंग्लैंड जीतेगा। ठीक है, और कह रहा है कि जो पार्टी जीतेगी, सपोज इंडिया जीता सो बी विल गिव ए 1000, इंग्लैंड जीता तो ए विल गिव बी रुपीज 1000। तो ए बोल, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर ये एक अनसर्टेन इवेंट पर, यानी इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो चल रहा है दैट इज एन अनसर्टेन इवेंट, मैच है, नहीं पता। ठीक है, नहीं पता इंडिया जीतेगा, नहीं पता इंग्लैंड जीतेगा, सो इवेंट इज अनसर्टेन। उस अनसर्टेन इवेंट के रिजल्ट आने पर प्रॉमिस किया जा रहा है मनी या मनी इज वर्थ दिया जाएगा। सो दिस इज वेजरिंग। ठीक है, ए बोल रहा है बी को आज बारिश होगी, बी बोल रहा है ए को आज बारिश नहीं होगी। सो कहता है अगर बारिश हुई यू विल गिव मी 1000, नहीं हुई आई विल गिव यू 1000। नाउ दिस इज आल्सो अ वेजर, right? So what are the features, what are the characteristics of a wagering agreement? The first one is promise to pay money or money is worth। जैसे मैंने बताया जो जीतेगा उसे पैसे मिलेंगे, ठीक है, जो हारेगा वो पैसे देगा। There are equal chances of gain or loss to the parties। So इंग्लैंड जीतेगा या इंडिया जीतेगा, nothing is known, so there are equal chances of gain or loss। आज बारिश होगी या नहीं होगी, right? Equal chances of gain or loss। तो 50-50 चांसेस है दोनों के जीतने के, किसी के भी चांस ज्यादा नहीं है, किसी का भी कम नहीं है, चांसेस आर एब्सोल्युटली 50-50। इवेंट इज अनसर्टेन, राइट? So which team wins the match, that is uncertain, right? We will get to know only at the end, so which team is going to win the match, that is uncertain। Next is no other interest in the event। ठीक है, नो अदर इंटरेस्ट, यानी ए का कोई मतलब, ए को मतलब नहीं है इंडिया जीत रहा है नहीं जीत रहा, बी को मतलब नहीं है इंग्लैंड जीत रहा है नहीं जीत रहा, उनको टीम से मतलब नहीं है, उनको मतलब है सिर्फ अपने मनी से। वो चाहते हैं उनका काम इसलिए हो बिकॉज दे गेट द मनी। बारिश आ रही है नहीं आ रही है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट मतलब किस चीज से है कि पैसे मिलेंगे हमें। इफ व्हाट वी हैव सेड कम्स ट्रू वी विल गेट द मनी। सो देयर इज नो अदर इंटरेस्ट इन द इवेंट। एंड लास्ट पॉइंट इज नो पार्टी हैज कंट्रोल ओवर द इवेंट। किसी भी पार्टी का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, ए का कंट्रोल नहीं है इंडिया के जीतने पर, बी का कंट्रोल नहीं है इंग्लैंड के जीतने पर, ए का कंट्रोल नहीं है बारिश आने पर, बी का कंट्रोल नहीं है बारिश ना आने पर, राइट? सो these all are wagering। I hope all these points are clear to you। Now what are the effects of a wagering agreement? wagering agreement का क्या impact है, क्या effect है? तो सबसे पहले जो wagering agreements हैं they are void, they cannot be enforced, they are absolutely void। ठीक है, as per Indian Contract Act wagering agreements are void। I'm repeating, as per Indian Contract Act wagering agreements are void, right? They cannot be enforced by law, right? So what are the effects of it? So here we discuss, ठीक है, सपोज ए और बी है, ठीक है, ये इनका वेजरिंग अग्रीमेंट हुआ और इसके अंदर ए और बी दोनों ने 500 सी के पास रखवा दिए। ठीक है, दोनों ने 500 का अमाउंट सी के पास रखवा दिया और सी को बोला कि जो भी पार्टी जीतेगी सी सारा अमाउंट उस विनिंग पार्टी को दे देगा।
ठीक है, C will give entire amount to the winning party. Now what happens? Suppose A wins. ठीक है, A is the winner. A is our winner. So here you can see winner of a bet cannot sue to recover the amount deposited by the loser with the stakeholder. Right. So C here is the stakeholder. Now if A wins, A cannot go to court of law and sue C for asking the 1000 rupees. जो उसका पैसा है वो अपना अपने पैसे ले सकते हैं, बट जो विनिंग अमाउंट है, ठीक है, विनिंग अमाउंट वो नहीं क्लेम कर सकता. बी ने जो 500 रुपए रखवाए हैं वो 500 रुपए नहीं क्लेम कर सकता. अपने जो 500 रुपए हैं वो ले सकता है, लेकिन जो बी ने रखवाए हैं 500 रुपए वो विनिंग अमाउंट सी से नहीं ले सकता. राइट. Second, it says, but if the stakeholder has not paid the amount to winner, suppose C ने A को नहीं पे किया, C ने A को 5,000 रुपए नहीं पे किए, so in this case जो B है वो अपने 500 रुपीज वापस ले सकता है C से. रिपीटिंग, अगर B ने जो अमाउंट है वो C ने अमाउंट A को नहीं दिया, विनिंग अमाउंट, so in that case B can recover his 500 from A, from C. But in case C has given the amount to A, 3 केसेस समझा रही हूँ मैं इसमें. थर्ड केस है कि अगर C ने जो एंटायर अमाउंट है 1000 रुपए वो A को दे दिए, तो उस केस में B 500 रुपए रिकवर भी नहीं कर सकता. फिर से रिपीट कर रही हूँ. फर्स्ट पॉइंट है, जो विनिंग पार्टी है वो स्टेक होल्डर से, ठीक है, अमाउंट रिकवर नहीं कर सकती, विनिंग अमाउंट रिकवर नहीं कर सकती. अगर स्टेक होल्डर ने विनिंग पार्टी को अमाउंट प्राइस पास ऑन कर दिया, जितने भी पैसे हैं, मनी है, पास ऑन कर दिया, तो लूजिंग पार्टी अपने पैसे वापस नहीं ले सकती. लेकिन अगर स्टेक होल्डर ने सारा पैसा विनिंग पार्टी को दे दिया, तो उस केस में जो लूजिंग पार्टी है वो अपना पैसा रिकवर स्टेक होल्डर से नहीं कर सकती. तो ये 3 पॉइंट है जो मैंने पहले वाले पॉइंट के अंदर मेंशन है. यू कैन रीड देम. So next point is, since wager is not unlawful in Indian Contract Act, because ये unlawful नहीं है, illegal नहीं है, so the transactions collateral to the main transactions are enforceable. For instance, A और B के बीच में ही bet लगी, ठीक है, और इसके अंदर B won the bet. बी बेट जीत गया और ए को यहाँ पे पैसे देने थे बी को. ए के पास सपोज 1000 रुपीज नहीं थे. ए वाज सपोज टू गिव 1000 रुपीज टू बी. ए डिडंट हैड द मनी. ए ने ये पैसा बोरो किया जेड से. जेड ने ए को मनी दिया, मनी लेंड किया 1000 रुपीज. सो अब ये जो ए और जेड के बीच का ट्रांजैक्शन है, दिस इज कोलेटरल. ये साइड ट्रांजैक्शन है, मेन ट्रांजैक्शन नहीं है, ये साइड ट्रांजैक्शन है. सो दिस इज वैलिड. सपोज ए पैसे दे देता है बी को 1000 रुपीज, वंस ही हैज गिवन, राइट, लेकिन वो ए को रिफ्यूज कर देता है दैट आई विल नॉट गिव यू मनी टू यू, आई एम नॉट गिविंग बैक मनी टू यू. मैंने जो पैसे दिए बी को वो वेजरिंग अग्रीमेंट के अंदर थे, वैलिड नहीं है, इसलिए यू आल्सो कैन नॉट एनफोर्स इट, राइट. सो बट हियर जेड शुड नो, यू शुड नो कि ये जो अग्रीमेंट है ए और जेड के बीच में, दिस इज कोलेटरल टू दी वेजरिंग अग्रीमेंट. वेजर है ए और बी के बीच में, जेड और ए के बीच में है कोलेटरल. सो कोलेटरल ट्रांजैक्शंस टू वेजर, दे आर वैलिड. कोलेटरल ट्रांजैक्शंस टू ऑल द अनलॉफुल अग्रीमेंट्स, राइट, they are valid if they are valid contract. So Z can recover money from A, but only this is only if the main transaction, wager, or any other main transaction is lawful. But if I talk about illegal transaction, suppose A ने B को पैसे देने थे C को किल करने के लिए या C को हार्म करने के लिए, C को इंजरी पहुंचाने के लिए. Now, this money being given to B was unlawful, illegal था ये, बिकॉज उसने बी को पैसे दिए हैं सी को इंजरी पहुंचाने के लिए. तो ये इलीगल ट्रांजैक्शन हो गया, ये अनलॉफुल ट्रांजैक्शन हो गया. सो इस केस में बी ने इंजरी पहुंचा दी और ए को पैसे देने हैं. so, यहाँ पर ए बोरो कर रहा है जेड से पैसा. नो इन दिस केस, दिस ट्रांजैक्शन बिटवीन जेड एंड ए, दिस इज अ कोलेटरल ट्रांजैक्शन टू एन इलीगल ट्रांजैक्शन. तो जो कोलेटरल होगा टू इलीगल ट्रांजैक्शन, दैट विल बी इनवैलिड.
वो वैलिड नहीं है, वो एब्सोल्युटली वॉइड है. तो आई होप दिस इज वो भी वॉइड एग्रीमेंट है. So I hope this is clear. So the transaction which is collateral to the main transaction, collateral to the main lawful transaction is valid, is enforceable, but transaction collateral to the unlawful or illegal transaction is unenforceable. So I hope this example is also clear to you. And one more thing that I would like to tell you, that wagering agreements are illegal in the states of Maharashtra and Gujarat. Right, wagering is illegal in the states of Maharashtra and Gujarat. So therefore, if wager happens, if this transaction happened in the state of Gujarat, ठीक है, अगर ये गुजरात में हुआ होता, so in this case Z could also have not been able to recover money from A. कि Z और A के बीच में भी जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो भी अनएनफोर्सिएबल है. महाराष्ट्र में भी अगर होता तो Z और A के बीच का ट्रांजैक्शन अनएनफोर्सिएबल है. So I hope this is clear to all of you. Next, we understand difference between contract of insurance and contract of wagering. तो हम इंश्योरेंस के अंदर क्या हो रहा है, सपोज किसी ने कार इंश्योरेंस ली, तो उसमें क्या होगा, अगर कार, सपोज कार इज डिस्ट्रॉयड इन फायर, so in that case the insurance company will give money to the insured. Suppose A ने इंश्योरेंस ली, ए ने कार इंश्योरेंस ली, और जो ए की कार है that is destroyed in fire, so A will get money from the insurer. तो इसके अंदर भी क्या हो रहा है, इसके अंदर भी एक अनसर्टेन इवेंट पे मनी और मनी इज वर्थ मिल रहा है. तो क्या ये भी वेजर है? नहीं, ये वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है. क्यों नहीं है, हम यहाँ से इसके पॉइंट से समझते हैं. ठीक है, यहाँ पर इट सेज द वन पॉइंट सेज नो अदर इंटरेस्ट इन द इवेंट. राइट, wagering में no other interest in the event, but is this the case in insurance? I talk about insurable interest here, this point. Is this the case? कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर. जिसने भी इंश्योरेंस ली है, कार इंश्योरेंस ली है, उसका अपनी इंटरेस्ट है कार में, अपनी कार को सेफ रखने में, अपनी कार को ठीक रखने में. द पर्सन इज इंटरेस्टेड, राइट. सो जिसने इंश्योरेंस ली है उसका इंटरेस्ट है अपनी कार को सेफ रखने में. वेजरिंग में जो सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट है एग्रीमेंट का, उसमें दोनों पार्टीज में से किसी भी पार्टी को कोई इंटरेस्ट नहीं है. राइट, इफ आई टॉक अबाउट कंसिडरेशन, सो इंश्योरेंस वेजरिंग में कोई कंसिडरेशन नहीं है. जो भी पार्टी जीत रहा है उसको पैसे मिल रहे हैं, जो लूज कर रहा है दैट पार्टी इज नॉट गेटिंग एनीथिंग. बट इन इंश्योरेंस, जो भी इंश्योरेंस ले रहा है, द पर्सन इज पेइंग फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम, द पर्सन इज पेइंग प्रीमियम, तो वहां पे कंसिडरेशन है. द इंश्योरेंस कंपनी इज गेटिंग प्रीमियम. राइट, enforceability insurance agreements, they are enforceable by law, but wagering they are not enforceable by law. Right, so the premium, if I talk about जो अमाउंट उसके अंदर डिसाइड हो रहा है इंश्योरेंस में, जो भी इंश्योरेंस का अमाउंट या जो प्रीमियम डिसाइड हो रहा है, दैट इज बेस्ड ऑन सम साइंटिफिक कैलकुलेशंस. एक्चुअरियल मैथमेटिक्स पे बेस्ड है वो. राइट, एक्चुअरियल कैलकुलेशंस है, साइंटिफिक कैलकुलेशंस है इंश्योरेंस के केस में ऑफ प्रीमियम and the amount being given to the insured. But in case of wagering, वो अपने ही आपसे डिस्कस कर रहे हैं, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 1 लाख रुपए इसके जीतने हारने पर, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि उन्होंने वो अमाउंट क्यों रखा. I talk about public welfare in case of insurance. Insurance agreements, they are there for public welfare, but wagering, they are against the public welfare. So I hope till wagering it is clear to all of you. Next is agreements contingent upon impossible events. So agreements contingent upon impossible events मतलब contingent क्या होता है, they are dependent. So A says I will give you 1 lakh if you marry C. I will give you 1 lakh if you marry C. ठीक है, and C
when they were entering into this agreement, this contract, वहां पर C already got married to D. Suppose they didn't have the knowledge and C already got married to D. Now, is this possible? C is already married to D. Is this possible? No, this is not possible. Right now, this is agreement contingent upon an impossible event. Or let me. You might have certain questions regarding this in your mind. So I'll explain it other way. C died at that time. Okay, C was already died when they entered into this contract that between A and B, I'll give you rupees 1 lakh if you will marry C. So C was no more at that particular point of time. So here, this was an agreement which was contingent upon an impossible event. Impossible event क्या था? B marrying C. So this was an impossible event. और A को B को कब मिलते पैसे? जब B marry करता एक dead person से. So this was impossible. Right? So यहाँ पर this is a void agreement. Next, last is agreement to do impossible acts. Right? So A says to B that I will give you rupees 10 lakhs if you discover treasure by magic. If you discover treasure by magic, I will give you rupees 10 lakhs. Now this is an agreement to do impossible thing. I will give you rupees 10 lakh if you put life into a person who died a year ago. ठीक है, उसकी body यहाँ पर cremated है, यहाँ पर buried है. You put life into this person, or the person died 2 hours back. You put life into this person. You put life into a dead person's body. This is also an agreement to do impossible act. This is also a void agreement. Right. So if you have any doubts regarding void agreements, you can please post your doubts in the question answer box. I'll answer them. If you have any doubts regarding these 7 points, you can please. This is void agreements going on, Lakshay. So if you have doubts, you can please mention your doubts. You can please write your doubts in the question answer box. Because this chapter is over, void agreements is over. So nobody has any doubt? Am I audible? If you have doubt, you can please raise your doubt. I'll wait for a minute. Difference between insurance and wagering. देखो इंश्योरेंस जो वेजर इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के अंदर आप कंसिडरेशन दे रहे हो. अगर आप इंश्योरेंस दे रहे हो तो यू आर गिविंग प्रीमियम. बिना प्रीमियम दिए हुए इंश्योरेंस नहीं मिल रही. बट क्या वेजरिंग में आप बदले में कुछ दे रहे? जो लूजिंग पार्टी है उसको क्या मिल रहा है बदले में? The party who is losing is getting nothing in return. नहीं. Or if you talk about interest, wagering में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है. I talked about मैच जीतेगा. So wagering के अंदर इंग्लैंड मैच जीत रहा है, आपका उनके मैच जीतने पर कोई इंटरेस्ट नहीं है. कौन सी टीम मैच जीत रही है आपको उससे मतलब नहीं है. आपको मतलब है अपने पैसे से. You are interested in your money. You should get the money. Right. And insurance, they are enforceable by law. Wagering is not. Insurance is in public interest, but wagering is not in public interest. Agreements contingent on impossible event. Contingent मतलब dependent. ठीक है कि अगर कोई दूसरा काम होगा तब हम ये काम करेंगे. So अगर A बोल रहा है B को, I will give you rupees 1 lakh if you marry C. So A giving rupees 1 lakh to B is contingent upon B marrying C. Right. So contingent हो गया wherein a party contingent even का हो गया कि contingent is the next event जिसके होने पर ही जो main event है वो होगा. ठीक है. So impossible A बोल रहा है B को that I will give you rupees 10 lakh if you marry C. So
अगर जो C है, if C is already dead at that point of time, so can B marry C? Right? So B marrying C, a dead person, is impossible event. So this is a void agreement. So agreements which are dependent upon the impossible, which are contingent upon the impossible event. So contingent कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाते हैं, कंटिंजेंट इवेंट्स क्या हो जाते हैं, जिनको करने पर ही मेन इवेंट होगा. दे आर कंटिंजेंट इवेंट्स, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. सो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है, विच आर एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम अदर इवेंट. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो सेक्शन हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था. आई डोंट नो अबाउट योर एग्जाम. और बुक के लिए मैंने आपको बताया था सुषमा अरोड़ा और रजनी जगोटा. रजनी जगोटा इज कंपैरेटिवली इजी. सुषमा अरोड़ा और रजनी जगोटा, दीज आर 2 बुक्स, राइट? सो agreements contingent upon impossible event. Sorry, I told you that. Void contract. Yes, Khushbu asked what is void contract. Void contract chapter 1 में समझाया था. void contract वो होते हैं जो शुरू के अंदर valid होते हैं, but because of happening of certain certain event they become invalid. Just a minute, class. Void contracts, for instance, void contracts वो होते हैं when they are entered into, they are valid. For instance, A और B के बीच में हुआ agreement car sale का. A ने बोला that I will give you my car for rupees 1 lakh. B says, okay, I'll buy your car for rupees 1 lakh. So this is a valid contract in the beginning. But the very next day, the car is destroyed in fire. Now, if the car is destroyed in fire, car जल गई, can that contract still happen? वो हो सकता है contract? No, the contract cannot happen because the car is already destroyed in fire. So void contract वो होते हैं तो which were valid when they were entered into, but because of certain events happening, they become invalid. They become impossible to perform. So ये difference है void और voidable में. ठीक है, voidable होता है coercion के केस में, undue influence के केस में, कि अगर उसे हम खराब कर सकें. So this is there in first chapter. Khushbu, you need to please go through first chapter for it. So what I am teaching is fine. I am trying to cover the entire syllabus. I'm covering, but that since we have just 15 hours, 15 hours, so I won't be able to cover the entire syllabus in 15 hours. So I am obviously trying to cut it short. So you need to refer the book. So contingent में explain कर रही हूँ. देखो contract हो सकते हैं absolute contract हो सकते हैं contingent. Absolute contract वो हो गए जो हर हाल में perform करने हैं. For instance, A और B के बीच में हो रहा है agreement कार सेल का. A दे रहा है कार B को, B दे रहा है पैसे A को. So this is an absolute contract. उन्हें करना ही है कि काम. तो अब A बोल रहा है B को कि I will sell my car to you for rupees 1 lakh if you become a member of Delhi Club. If you become a member of Delhi Sports Club, I will sell my car to you for rupees 1 lakh. तो यहाँ पर this is contingent कि ये dependent है. अगर B Delhi Sports Club का member बनेगा तभी A उसको अपनी कार सेल करेगा, right? So I hope this is clear to you. But the effects of wagering will take time right now. Please go through it in the book. If there are doubts, I'll again cater to it in a doubt session. No, agreements contingent upon impossible event and agreements to do impossible act, they are same. They are different. वहां पर they're dependent upon some impossible event. So class, I am winding up this class. So I'll take up a doubt session if provided. There you can ask your doubts. Thank you.